Hello. This chapter, Gorilla in the Guest Room, is a perfect example of how a human being can manifest his love for all forms of life, all kinds of animal. So here is a story by Gerald Darrell. He is a famous writer about animals. He is an animal activist. So this story is one of his experiences about looking after a gorilla and how he had to buy the gorilla, how he had to bring a female gorilla so that they can do the mating, and his experiences with the gorilla. So let us begin the chapter line by line. So the very first concept in this story is very significant, and you have to understand it with a bit of patience. That this Gerald Durrell is an animal activist. He is a lover of animal. So if he is a lover of animal, why does he captivate animals in a zoo? So to answer this idea, the narrator begins with the very first line. He says, "It was toward the end of second year I decided that zoo, not being well established, must cease to be a mere show of animals." So in the beginning, he opened zoos, like all zoo all over the world, like Alipur Zoo, like zoo wherever you live. But after running the zoo for a year, he realized that zoo where animals are kept, it should not be for the exhibition of animals. It should be for the preservation of animals. Now, though apparently it might seem the same, but they are not the same. Because when you make animal as an exhibition, you keep those animals which are very attractive for the people. But when you think about the preservation of animal, you start keeping those animals which are rare, which are about to become extinct, and which needs to be kept alive. Otherwise, they will become extinct for the rest of the humanity, for eternity, for whole mankind. So, in the beginning, the narrator opened his zoo. It was like any other zoo. Then he decided that अब से now onwards there will be no animal जो सिर्फ आके अपना पुच्छी हिलाएगी, they will dance and they will entertain. It became something towards the conservation of wildlife. So he started keeping those animals which were rare, which were unique. उनको बचाना बहुत जरूरी था, because if they live in jungle, the poachers might kill them, and then if there are only few, we will never get them back. So narrator is saying, I felt it would be essentially to weed out the commoner and replace them with special ones. So in the beginning, he also had that same kind of animals like elephant, tiger, chimpanzee. He had all this. But then he started removing those common animals, sending them to jungle, and started replacing them with rare and threatened species. मतलब वो animal जो बहुत कम है, जिसको सब मारने का कोशिश कर रहा है, and if you don't preserve them, they will become extinct. So, the commoner animals were replaced with those animals जो दुनिया में rare है, जो बहुत threatened है, सब poachers उसको मारना चाहते हैं, वो animal को narrator ने अपने zoo में रखने लगा. The narrator started to keep only those animals which are rare into his zoo. That is, species which were threatened with extinction in the wild state. मतलब अगर उन जानवरों को बचाया नहीं जाएगा तो वो जानवर बहुत जल्दी ही दुनिया से खत्म हो जाएंगे. So the list of those extinct species were very long. In fact, without reptile it became 3 fat volume, माने 3 किताब हो गए, डायरी. रेयर स्पीसीज का नाम लिखते लिखते लिखते, ये रेयर है, ये रेयर है, ये एक्सटिंक्ट है, ये थ्रेटेंड है, ये रेयर है, ये थ्रेटेंड. It became 3 books. I was wondering which of this massive list of endangered species were to start with. So narrator was thinking कि इतने सारे एनिमल एक्सटिंक्ट है, तो अब कौन से एनिमल को सबसे पहले बचाया जाए. When the decision was taken out of my hand, so there were many people, so other people started also advising him. तभी क्या हुआ, an animal dealer called him
and he said he wanted to sell a baby gorilla. मतलब एक डीलर, एनिमल डीलर, वो फोन करके बोल रहा है जेरल डरल को. द डीलर कॉल जेरल डरल एंड सेड आई वांट टू sell a baby gorilla. Now, for common human being like you and me, who hardly have any sense of animal, I assume most of you do not have. Now, those who have, I do respect and appreciate them. But आम आदमी का बात हो रहा है, इनके पास बहुत कम जानवरों के लिए कुछ नॉलेज होते हैं. Most people do not. So, for a person who is an animal lover and who knows a lot about animal, and especially like people like Gerald Durrell who who are an expert in this field, they know the value of gorilla. So narrator says gorilla have never been exceptionally numerous as species. So gorilla दुनिया में बहुत कम हुए. With the state of Africa at that time when narrator was writing it, बहुत झमेला हो रहा था. So people were dying. At that moment, it seems to me that they might become extinct in the next 20 years. So narrator thought that gorilla भी तो extinct होने वाला animal है. So he thought of even preserving gorilla. Newly emergent governments are generally far too busy providing for themselves than worry about gorilla. So new colonies are released हुए Africa and many other countries like India and many other countries, Australia and all. So ये कंट्री जो इमर्जेंट गवर्नमेंट, अभी उनका नया नया कैबिनेट बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, डिसाइड हो रहा है कौन पार्टी होगा, कौन गवर्नर, कौन रूलिंग पार्टी, कौन ये सब. एट दैट टाइम टॉकिंग अबाउट गोरिल्ला इज द लास्ट थिंग दैट दे वुड थिंक अबाउट. लोग कहाँ रहेंगे, कौन सा सेट होगा, अब यही डिसाइड नहीं हो रहा है. सो पीपल did not worry about the fate of wildlife. Okay. History has often proved time and again how rapidly a species can become extinct, even a numerous one. So, गोरिल्ला थोड़ा बहुत है, लेकिन क्योंकि लोग गोरिल्ला को बचाने का कोई कोशिश नहीं कर रहे, since people are not trying to save gorilla, very soon gorilla might become extinct. So, gorilla was on the list of endangered species. So, narrator decided that he would try to buy the gorilla. बट नरेटर वॉज नॉट कन्विंस के जो बेचने वाला है वो सच में गोरिल्ला बेच रहा है कि नहीं. बिकॉज डीलर जो फोन किया है, नरेटर इज सेइंग कि मेरा एक्सपीरियंस है कि जो डीलर लोग होते हैं वो उनके लिए बर्ड, रेप्टाइल, मैमल सब बराबर है, बिकॉज दे हैव नो जियोलॉजिकल एनिमल का नॉलेज. सो नरेटर वेंट देयर. I felt that it was more likely baby gorilla can be a chimpanzee. Narrator is saying हमको फोन करके बुलाए गोरिल्ला, वहां जाके देखे चिंपांजी है या डोंकी है, ये पता नहीं कोई और एनिमल है. However, I could not afford to turn down the offer. So narrator, since is an animal lover, उसके लिए गोरिल्ला एक ऑफर है और हम लोग के लिए शायद न्यूसेंस. So narrator is a genuine animal lover. He has spent all his life on the conservation of wildlife. So he thought कि गोरिल्ला खरीदना एक बहुत उसके लिए एक मस्त ऑफर है इतना. तो narrator said over the phone, कितना में है, what is the cost of gorilla? So जो आदमी बेच रहा था वो बोल रहा है कि 1200 pound, and that too in those days. So narrator, the moment he had 1200 pound, he started visualizing the image of his bank manager and what he would think when he would ask for more loans. So brief vision of my bank manager flooded in front of my face. So narrator is saying कि जैसे हम 1200 मतलब पाउंड सुने, मेरे दिमाग में मेरे मैनेजर का फोन आ गया, मतलब इमेज आ गया, मतलब बैंक में जो लोन देने वाले मैनेजर होते हैं. So narrator started visualizing the loan manager, the bank manager who gives loan. So, and then he repressed it. Narrator tried to forget about all about loan and bank loan manager. He said, all right. I said in a confident voice, I will meet you in London airport, and if it is in good condition, I will have it. So narrator does not live in London. He's in a different geographical location. So he says, I will come there by flight. अगर सही लगा तो हम खरीद लेंगे. So narrator decides that he will buy the baby gorilla. So जब ये narrator फोन कर रहा था तो उसकी wife Jackie सुन रही थी ये सब. So the moment I put down, my wife was looking me with a beastly eyes and I said,
What are you going to have? Wife पूछ रही, क्या खरीदने जा रहे आप? Narrator said, baby gorilla. Nonchalantly without any emotion. नरेटर की मम्मी भी थी, बोली वाह बेबी गोरिल्ला, सच अ गुड थिंग, कितने क्यूट होते हैं. नाउ मम्मी is very pro animal, wife is also an animal lover, but the wife is thinking कि घर कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, you have to pay the EMI of the flat, of the bungalow and car and etc, so on and so forth. But the wife, the author is understanding. So the narrator says Jackpin, उसकी wife was practical. Wife पूछी कितना दाम है? As a matter of fact, अब narrator दाम बोल देगा 1200, तो probably the wife will have a heart attack. So he says, listen, as a matter of fact, gorilla is a very rare animal and it is our policy to save the endangered species. तो ये बहुत अच्छा amount है. भाई बोली पैसा कितना लगेगा? What is the amount of the gorilla? What is the price of gorilla? जब इतना रूडली ब्लंटली वो बोली, ऑथर को बीच में रोक के, तो नैरेटर इज सेइंग 1200 पाउंड. वाइफ एकदम गुस्सा हो गई. 1200 पाउंड. शी सेड 1200, यू मस्ट बी मैड. बोलती 1200. देन सी सेज कि तुम्हारा तो ओवरड्राफ्ट है, बैंक से तुमने इतना लोन लिया, वो तो इस नेशन के उधार से भी ज्यादा, मतलब एक नेशन इंडिया पाकिस्तान से लोन लेता है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका कोई कंट्री से, रशिया से लोन लेता है. सो सी सेइंग कि योर लोन इज बिगर देन द नेशनल लोन टेकन फ्रॉम अदर कंट्री एंड यू आर गोइंग टू टेक मोर लोन ऑफ 1200 पाउंड्स. So the wife is very angry because the wife knows कि अगर ये और लोन लेगा और घर में प्रॉब्लम होगा, खर्चा चलाने में मुश्किल. So wife, as usual, wives are very sensitive and they're very practical most of the time. So the wife says you are going to pay 1200 pounds. She's saying where will you get the money? And then the wife is saying, do you think कि तुम्हारा बैंक मैनेजर तुमको देगा? तुमको गुस्सा से देखेगा. So narrator said, okay, I will take the money, I will collect the money from some other sources. So नरेटर इज सेइंग कि डोंट यू रियलाइज, तुमको मालूम नहीं ये बहुत अमीर लोगों का आइलैंड है और यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं. सो सिर्फ कॉकटेल मॉकटेल शराब पी के नाचते एनिमल लोग की तरह. सो अभी ये टाइम है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करें, एनिमल लोग को बचाने में हेल्प करें. वैसे भी वो लोग बिलियनियर है, इधर उधर नाचा नुची करते हैं. दे कीप ऑन एंजॉयिंग डांसिंग सिंगिंग लाइक जापानीज सेड माइज, मैंने चूहा की तरह नाचते रहते. अब टाइम है दे शुड इन गिव सम मनी फॉर द एनिमल प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन. वाइफ बोल रही है ये आइडिया तो पहले आइडिया से भी ज्यादा स्टूपिड है. वाइफ सेज कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू टेक ए बेबी गोरिल्ला, ये एक स्टूपिड आइडिया. उसके बाद यू आर ट्राइंग टू टेक मनी फ्रॉम बिलियनियर्स फॉर एनिमल, ये उससे भी ज्यादा स्टूपिड आइडिया अकॉर्डिंग टू द वाइफ. सो नरेटर ignoring his wife pessimistic माने negative and anti-social outlook. Anti-social मतलब she is not trying to bring an animal, so she is called anti-social. So narrator is saying कि मेरी wife का वो pessimistic वो anti-social outlook को मैंने नहीं देखा, but I took the phone, उस जमाने वो लैंडलाइन वाला फोन होता है, and he called his friend Hope. So hello, Hope said, what can I do for you, Gerald? So Gerald Durrell, the narrator, the writer, the animal activist, he's saying I want to have the list of the richest people in this island. So he's saying कि हमको सब अमीर आदमी लोग का लिस्ट चाहिए, उनका फोन नंबर, उनका नाम. So उसका फ्रेंड होप बोल रहा है all the richest, now what are you up to? तो उसका फ्रेंड भी उसको पहचानता ही था. Then he says, Gerald, अब क्या करने वाले हो? Well, I have been offered a baby gorilla at a very good price. Only if I have to have 1200 pound. नाइटर इज सेइंग कि बस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. एक बेबी गोरिल्ला हमको मिली है और उसके लिए हमको 1200 पाउंड चाहिए. The rest of the sentence were drawn by rich laughter. So the person on the other side, his friend Hope, started laughing. And he said, do you think that rich people care about all this? He says, Gerald, Jerry, you're dirty, you're idiot. So narrator saying, what is the wrong with this? आखिर खराबी क्या है अगर अमीर आदमी कुछ कंट्रीब्यूट करें towards buying this rare animal, तो खराबी क्या है? After all, it is their duty to save some money, give some money for this good noble cause.
The friend on the other side was very practical. He said, I'm afraid they don't. They don't care for keeping gorilla alive or chimpanzee rare species बचाने का परवाह उनको नहीं होता है. So the other friend says, listen, Daryl, you realize and I realize that animals should be preserved, but these rich people probably don't realize. Narrator is very wise. He says, yes, you are right, but I can try. करके देखते हैं होगा. I'll try, let's see. It is worth a try, but I don't. Narrator का वो जो फ्रेंड था जो उसको लिस्ट में नाम देने वाला था, बोल रहा ठीक है डैरल, लेकिन ज्यादा don't pin your hope on it. He says okay. Within half an hour you call me. तब तक I will collect all the rich people's phone number and name. I'll give you all. After half an hour, narrator ने फिर उसको फोन किया, तो उसके फ्रेंड होप ने उसको डिक्टेट करा दिया सारा रिच लोगों का नाम एंड नंबर एंड एवरीथिंग. So he started calling everybody. Good morning, Miss Gargle, Gerald Darrell here from the zoo. I'm sorry to warn you, but we are going to buy a bay. So ये सबको फोन करके बोल रहा है, Good morning, ma'am. Good morning, sir. हम एक गोरिल्ला खरीद रहे हैं. So you can at least buy a part of it. You can buy a leg or a head or something or the other. So he's asking everybody to pay a small amount. इससे एनिमल का कुछ कुछ पार्ट खरीदा जा सके. मतलब ही सेइंग इन ए फनी वे, मतलब एक 1200 रुपए का कुछ एक पार्ट, 1200 पाउंड का कुछ एक पार्ट आप दे दीजिए. यू कैन परचेज अ स्मॉल अमाउंट से लेग और समथिंग. सो कुछ कुछ लोगों ने दिया. लंच टाइम तक 1200 पाउंड कलेक्ट हो गया. नाउ इट वाज एट दैट पॉइंट कि लिस्ट में दूसरा आदमी का नाम जो था उसका उनका नाम था मेजर डोमो. नरेटर इज सेइंग आई हैव नेवर मेट हिम एंड आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि लोग कैसे होंगे. But still he called him. So he explained the whole idea. And then the man on the other side, Major Domo, he chuckled and said, कितना पैसा चाहिए? That is a 1200 pound. So the man said, how much have you collected? That is said, 200 collect हुआ, 1000 चाहिए. So that rich super billionaire kind of man, he said, एक काम कीजिए, बाकी किसी को फोन मत कीजिए, बैलेंस जो 1000 रुपये आके हमसे ले जाइए. The narrator is saying, to see, I was surprised would be least. I was more than happy. I could not believe. Narrator is saying, at the most I thought he will give me some money. एक आदमी से narrator is saying to expect 1000 pound was avarice, was greed. And here was Major Domo offering the baby gorilla in a platter. Platter मतलब एकदम पूरा तैयार हो गया. So he said, thank you, and slammed on the phone, and he went in the zoo and told everybody, gorilla is coming, gorilla is coming. Baby gorilla is coming. Then he went to London to bring the ape, gorilla. Now one fear was that if I arrived, narrator says कि अब $1200 तो हो गया है, sorry, pound तो हो गया है. अब अगर narrator जेल डायल वहां गया और वहां गोरिल्ला के बजाय कोई और जानवर निकला तो. But narrator met him and the dealer showed him to the room जहाँ animal लोग रहते हैं, वो Royal Society of Prevention of Cruelty to Animal. So the moment he opened the door, and this is a very beautiful line, and I saw a couple of chimpanzee. That was a chimpanzee. So he says, हम इतना दूर से फ्लाइट से आए, गोरिल्ला खरीदने, चिंपांजी क्यों है? Then his heart sank. He said, ये क्या हुआ, इतना पैसा बर्बाद हो गया. But dealer said, अरे सर यहाँ नहीं, वो दूसरा दरवाजा, दूसरा. And then Pongo walked into his life. See the language, see the utility of sentences. This is the way when people say, when I met her, she became my partner. When I met, and then she became my role model. So here is narrator using language in a very sophisticated and delicate way. Thereby, I comment, it shows, it manifests his love for animals. He is not saying मैंने इन पंगों को खरीद लिया, पैक करा दिया. He is saying वो मेरी जिंदगी में आ गई. And Pongo walked into his life and he has already named it. मैंने गोरिल्ला का नाम भी इसने रख दिया. So ये गोरिल्ला का नाम है Pongo और Pongo उसके जिंदगी में आ गया. So now this is a description of Pongo. He stood 18 inches high, मतलब 1.5 फुट का वो था. Quite handsome, good looking. Narrator says कि इतना अच्छा गोरिल्ला मैंने शायद ही देखा है. So वो गोरिल्ला narrator के पास आया, lifted him. Okay, very heavy he was. Okay, muscles था उसका, गोरिल्ला है. और एकदम वो स्लिम ट्रिम था, नॉट एन एक्स्ट्रा आउंस ऑफ फैट. हिज चॉकलेट कलर फर, मैंने उसका फर जो था, स्किन, वो चॉकलेट कलर का था.
Okay, and he had very soft skin and was very shining, like a patent on a shining leather. His eyes were small, very deep, and there was a twinkling, उसमें एक चमक था, जैसे चिप ऑफ कोल में जो चमक था उसके आंखों में वैसा चमक था. He lay back in his arm and studied me. नरेटर को पहली बार देखा तो जैसे बच्चे नए आदमी को देखते हैं, गोरिल्ला भी नरेटर को ध्यान से देख रहा था. Then he tickled नरेटर का beard. If you see in the photo, you can see him in YouTube and all. So he has a bit bigger beard than me. So when Ponga started touching his beard, hoping कि इसके अंदर कुछ हो, it tickled his ribs. नरेटर saying मैंने उसको ऐसे गुदगुदी दिया. Okay, and he started giggling, laughing, and his eyes had a sign of amusement. The narrator sat down and gave him some banana, and he accepted it and he ate it. I wrote out the check. Narrator wrote वो 1200 का चेक उसने लिखा और वो एक एनिमल को पैक करने वाला क्रेट होता है उसमें उसने पैक करके अपने कंट्री जर्सी ले आया. When he landed in the airport, Npong got out of the crate. He drove into the zoo. मतलब narrator ने उसको कार में अलग नहीं लैब पे बिठाया because this shows his real love. So when Npongo was watching those cow pass by from the car, occasionally he would look into narrator's face. When we arrived, I carried him up to the flat. Narrator ने अभी तक उसके लिए तो कोई केज नहीं बनाया है. So अब उसको रखना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ना. You have to keep the animal somewhere. You can't keep him anywhere. So since the crate when a cage was not made, he decided that he narrator decided कि वो गोरिल्ला जिसका नाम है Npongo वो रहेगा गेस्ट रूम में. इसलिए इस कहानी का नाम है गोरिल्ला एंड द गेस्ट रूम. सो पहले वो बहुत ग्रेव था, मतलब बहुत सीरियस था, लेकिन बहुत पोलाइट था. ओके, तो इतना सीरियस और पोलाइट गोरिल्ला से नरेटर की वाइफ और मम्मी का बहुत लगाव हो गया. दे बिकेम इमोशनली वेरी अटैच्ड टू हिम. सो ही स्टार्टेड लॉपिंग ऑन द लॉलिंग ऑन द सोफा में जंप करने लगा, कूदने लगा, नॉर्मल ऐसे सो खेलने लगा. और फिर नरेटर की मम्मी और उसकी वाइफ उसके लिए बहुत सारा वो सब डेलिकेसीज, मतलब ब्यूटीफुल डिशेस लाई उसके लिए, मतलब जैसे वाटरमेलन ये सब, वाटर मतलब जो जो एनिमल खाते बनाना है. एंड द स्टाफ केम one by one to pay homage to him as if he was a black button. मतलब सब आके उसका दर्शन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई भगवान है. ब्लैक लोगों का भगवान. सो ये नरेटर हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर. एट द सेम टाइम he has an extreme a delicate use of language for animals. Throughout the story, I have not seen a single word where he is using the language that we use to describe an animal. He is describing an animal as it's a human being. So he is saying कि सब कोई आके उसको homage दे रहे थे ना. This homage word is normally used when you go to mandir or darshan, and so here he is using it for animal. Having previously suffered by keeping, so narrator is saying कि उसका एक previous experience है कि he had once kept a chimpanzee called Chumli, and वो चिंपांजी पूरा घर को बर्बाद कर दी थी. एक ऐसा घर घर बना दी थी कि बॉम्ब साइट लग रहा था. सो नरेटर डिसाइडेड इसको अपने रूम में तो नहीं रखेगा, जब तक कि क्रेट नहीं बन जाता. ही विल कीप इट इनटू द गेस्ट रूम. सो ही वॉकड इनटू, सब जगह जाके प्रोफेसर जैसा सब कुछ देखने लगा, ऑर्नामेंट को, चीज़ों को. ओके, चुमली तो बहुत चीज़ तोड़ी थी. सो नरेटर उसके आने से सब मतलब एक्सपेंसिव चीज़ों को हटा दिए. सो नरेटर इज सेइंग कि वो ज़्यादा कुछ गलती नहीं की, एक दो बार मतलब थोड़ा बहुत बदमाशी किया. ओके, एक टॉयलेट कर दिया. ओके, अब नया नया है, बच्चों को भी ट्रेनिंग देना पड़ता है टॉयलेट का, छोटे छोटे मतलब 1 साल 2 साल के बच्चों को. तो नरेटर इज सेइंग कि फिर भी उसका बिहेवियर एग्जाम्पलरी था. ओके, एंड बाय द टाइम ही वाज मेड टू स्लीप, नरेटर की मम्मी इतनी एक्साइटेड होगी कि बोल दी इसके लिए तुम क्रेट बनाओ ही मत, इसको मेरे साथ ही घर में रहने दो, रूम में. बट नरेटर इज सेइंग नहीं, ये सब उसको एक्सपीरियंस हो गया था कि कोई भी एनिमल को रूम में रखना इज वेरी डेंजरस. और ये तो अभी मतलब पेट भी नहीं हुआ, इज नॉट सिविलाइज, इज नॉट ट्रेंड. सो द गेस्ट रूम में जब तक वो था तब तक वो अपना बहुत सारा निशानी छोड़ के गया था. कहीं कहीं कुछ ऐसा ड्राइंग कर दिया था कि लगता था जापान का मैप है.
by one of the invented ancient man. तो पहले के लोग कुछ दीवार में ऐसे ऐसे बना देते थे, he had drawn it. And this was nicely executed in Scotland, एक design था. I had bought Npongo might like some teeny raspberries आया था, तो raspberries लेके दीवार पे अपना डिजाइन बना दिया था. He had liked them और बहुत खाया था और ऐसा बनाया था कि गंदा हो गया था, but narrator has a sense of humor. He's saying कि लग रहा था जापान का मैप. Next to paraffin, I know of no other commodity managed to vomit. मतलब बहुत कुछ पैराफिन लगाने के बाद भी दीवार से वो दाग नहीं गया. पैराफिन इज अ लिक्विड टू रिमूव, बच्चे ड्राइंग कर देते हैं उनसे, बट वो गया नहीं. फॉर मंथ एनपोंग, तो जब भी कोई आता तो फॉर मंथ एनपोंगो सजोन नो गेस्ट रूम वाज अपोलाइजिंग टू गेस्ट फॉर द फ्लोर. तो जो कोई भी गेस्ट मतलब लोग आते तो सबको सॉरी बोलना पड़ता कि देखिए हमारे यहाँ जो गोरिल्ला था वो ऐसा कर दिया. कभी कभी तो घर ऐसा हो जाता कि लगता कि एक एल हाउस है, मतलब जहाँ पागल लोग रहते हैं वैसा हो जाता. या जहाँ मतलब ऑर्फेनेज जैसे, जहाँ जिनका कोई घर बार नहीं होता तो गवर्नमेंट उनके लिए एक स्पेशल घर बनाता है, वैसा घर लगने लगा. ओके, सो इन पोंगो हैड ए स्पेशल. इन पोंगो जो था ना, वो दरवाजे को कभी कभी वो नॉब ऐसा घुमाता कि एक बार तो हैंडल जो है उखड़ के हाथ में ही आ गया. एंड ही सिंस ही वाज ग्रोइंग, और गोरिल्ला के पास बहुत करेज होता है. One of the things which particularly interested narrator was his different approach to every problem. मतलब आफ्टर ऑल गोरिल्ला है तो उसको हर एक प्रॉब्लम को फेस करने का एक डिफरेंट इंसाइट. ए बेबी चिंपांजी यूज्ड टू बी बॉट आउट ऑफ हिज केज. मैंने बेबी चिंपांजी को जब निकाला जाता है तो वो ग्रीक हीरोइन के चिल्लाती थी, बाल वाल खोल के ऐसे ऐसे करके चिल्लाती थी. बट इन पोंगो वैसा नहीं था. ऑल्टो डिप्लोरिंग मतलब चिल्लाता था, बट ही वुड स्लोली एक्सेप्ट द सिचुएशन. मतलब चिंपांजी थी, वो ग्रीक ट्रेजेडी को हीरोइन की तरह लोकोसिस बहुत बोलती चिल्लाती थी, लेकिन इन पोंगो ऐसा नहीं था. इन पोंगो थोड़ा बहुत चिल्लाता था, बट वो समझ जाता था कि फिलहाल दिस इज ओनली इनएविटेबल मतलब ऑप्शन. तब जब लोग हमको केज में रखे हैं तो रहना ही पड़ेगा. हिज ओनली प्रोटेस्ट वुड बी ए कपल ऑफ स्कार. एक दो बार चिल्लाता, फिर वो नहीं चिल्लाता. सो चिंपांजी और गोरिल्ला में थोड़ा सा, पहले जो चिंपांजी थी और इस गोरिल्ला में थोड़ा फर्क है. ये बहुत चिल्लाती थी और ये थोड़ा कम. Owing to his attractive appearance and disposition, he had a sense of humor. मतलब narrator is saying कि गोरिल्ला के पास एक फन लविंग नेचर था. थोड़ा दिन में वो जू का सब मतलब सब लोग जू में उससे प्यार करने लगे. एवरी फाइन आफ्टरनून, वो हर आफ्टरनून में वो अपने केस से निकल के, क्रेट से निकल के लॉन में आता. तो जो वहाँ जू में लोग फोटो लेने आते तो उनके पास जाता, पोज देता और कभी कभी उनका कैमरा लेके भाग जाता, तो उनके पैर टान देता. कभी कभी तो लगता दे विल हैव ए स्लिप डिस्क, बट ऐसा हुआ नहीं. और जब वो पोज देते देते कभी कभी कैमरा लेके ऐसे कर देता तो कैमरा का फोटो किसी एंगल के एम्प्टी कॉर्नर ऑफ द गार्डन आ जाता. सो इन पोंगो had a sense of humor. He used to pose for the photographs, and at a very crucial moment when the person is focusing in his camera, he used to pull their leg, push them, and it gives him immense pleasure. He is after all an animal and like a child, and it used to make him feel with happiness. तो ऐसे करके 12 months passed, एंड इन पोंगो का हाइट और स्ट्रेंथ और करेज डबल हो गया. अब इन पोंगो इतना बड़ा हो गया है तो इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल हिम. और अब ये अकॉर्डिंग टू नरेटर इज एन एनिमल एक्सपर्ट, ही थिंक्स दैट ना इन पोंगो का शादी का उम्र हो गया अकॉर्डिंग टू ऑल दिस जियोलॉजिकल नॉलेज. लेकिन शादी करने के लिए दुल्हन चाहिए, और दुल्हन मतलब एक गोरीली खरीदनी पड़ेगी, और गोरीली मैंने बेबी फीमेल गोरिल्ला खरीदने के लिए तो भाई साहब पैसा चाहिए. If you want to buy a baby gorilla again, already he has taken so much of loan that his wife said that your bank account loan is like a national debt. Dusra, he has already taken chanda, okay, money from people, subscription. Now, what will he do? So
he decided that he will buy the animal on EMI, easy monthly installment. So he decided कि वो गोरिल्ला के लिए बीवी मतलब खरीद के ही लाएगा, खरीदी बीवी खरीदी, गोरिल्ला की बीवी तो खरीद के ही आएगी. आई हैव नो यूज फॉर जू. सो ही सेज कि अगर हम जू में ऐसे एनिमल को रखें बिना उनके पार्टनर के, so they will become very morose, they will become very sad, and they will become eccentric, and they will start behaving abnormally. So और वो अगर उसको मतलब मेटिंग ना कराया जाए तो लोगों को और हार्म करेगा, किसी का सर पर तोड़ देगा, किसी का नेक टूट जाएगा. सो और अगर ह्यूमन बीइंग के साथ रहे तो उनसे उनके साथ उतना दिन रह नहीं पाएगा. सो नरेटर थॉट दैट द बेस्ट वे इज टू गेट हिम मैरिड. So narrator thought that he will make him get married to somebody. अगर नरेटर का मतलब नरेटर थिंक्स, उसका ये जियोलॉजिकल एक्सपर्टाइज नॉलेज है कि if they are not married they become very lonely, so he thought of procuring मतलब arranging for a wife. Okay, so I telephoned the dealer जिससे वो इन पोंगो खरीदा था, उसको फोन किया. बोला कि हम इन पोंगो खरीदे तो याद है एक साल पहले आई केम टू लंदन in a flight and then I gave you a check. I want a female gorilla. सो अब अफ्रीका से वो सब एनिमल आ रहा था, तो अफ्रीका का कंडीशन अच्छा नहीं था. सो प्राइजेस बहुत हाई हो गए थे. सो अब वो बोल रहा है कि बेबी मतलब फीमेल गोरिल्ला मिलेगी आपको 1500 पाउंड में. देयर फॉलो 2 days ऑफ सोल सर्चिंग. सोल सर्चिंग मतलब नेट अपना सब पूछ रहा है क्या करे 1500 पाउंड खर्चा करे, कहीं से जुगाड़ करे, क्या इन पोंगो के लिए वाइफ जुगाड़ करे, शुड आई गेट इन पोंगो वाइफ. आई न्यू वुड नॉट एफोर्ड द अमाउंट ऑफ मनी इन अ लम्प सम. नरेटर बोल रहा है कि उसको पता था कि एक साथ तो इतना होगा नहीं. सो वो फिर डीलर को फोन किया. वो बोला सुनिए, हम आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे. और वो आदमी डीलर भी तैयार हो गया इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए. सो नरेटर डिसाइडेड दैट ही विल बाई द एनिमल ऑन ईएमआई सिस्टम. जैसे लोग कार खरीदते थोड़ा थोड़ा पैसा देते वैसे ही. अब जू में सब एनिमल लव रही थे, नरेटर नरेटर की मम्मी, नरेटर की वाइफ, जैकिन एंड एवरीबडी. सो दे आर ऑल वेटिंग ओके फॉर दिस. सो दे डिसाइडेड दैट दे विल एक ऐसे बॉक्स लगाएंगे कि वहाँ लिख देंगे कि ये नैंडी को हमने खरीदा है और आप लोग प्लीज कुछ चंदा दीजिए ताकि हम लोग इसको खरीद पाए, इसका इंस्टॉलमेंट दे पाए. तो नैंडी आई एक क्रेट में. I'd have considered small for a squirrel. So Enpong को appeared to be in perfect condition. मतलब वो छोटी थी, उसका फर जो था ग्लॉसी था, वो मोट मतलब she was fat, her skin was like a satin. Okay, her eyes that impressed me most. लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था. Nandi is a wife of Enpong. मैंने अभी शादी नहीं हुआ. Nandi eyes were large and lustrous. उसकी आंखों में एक चमक था. And she looked sideways. She never looked in front. क्यों? Because of human experience. हुआ क्या था कि उसके सर पे मैंने किसी ह्यूमन बीइंग ने एक लोहा से ऐसा मारा था कि यहाँ से यहाँ तक दाग हो गया. तब से उसको ह्यूमन बीइंग से बहुत डर लगता है. इट वाज 6 and 7 inches. Since he was being caught, some over and मतलब कोई इंसान ने उसको एक मतलब घास काटने मैचेटा से ऐसा मारा था कि उसके स्केल में एक बहुत बड़ा स्काल्प में या दाग हो गया था. Since then she is very afraid of human beings. मतलब नैंडी नरेटर बोल रहे हैं कि उसको एनिमल लोग से बहुत डर लगता है, और वो एनिमल लोग से भी डर लगता है और ह्यूमन बीइंग से भी डर लगता है. तब से उसको एक हम लोग ह्यूमन बीइंग के लैंग्वेज में बोले तो डिप्रेशन में, एक ट्रॉमा में, एक फोबिया में बिकॉज ऑफ अदर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. Narrator is saying with such an introduction to human race, 90 is supposed to be an antisocial. तो इन लोगों को अब क्या कराना है? अब slowly by narrator is trying to build his relationship, his friendship with this animal.
So narrator, we kept Nandi in a separate cage. मतलब पहले लाके लोगों को मिलाया नहीं गया, पहले नैंडी को एक केज में रखा गया, उसके सामने वाले केज में इनपोंगो है, ताकि वो अपने हस्बैंड को देखे, शायद उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, बातचीत करे, दोस्ती हो जाए, देन दे विल स्टार्ट मेटिंग। ओके, सो नरेटर न्यू कि अगर इसको नैंडी और इनपोंगो को एक ही केज में रख दिया जाएगा तो नैंडी विल बी किल्ड बाय इनपोंगो, बिकॉज इनपोंगो इज वेरी मस्कुलर, वेरी बिग, नैंडी कंपेरेटिवली छोटी है और वो डरी भी हुई है, उसका फेस और उसका आईज हमेशा डरा डरा रहता है, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू बिकम फ्रेंड्स। द मॉर्निंग व्हेन वी लेट हर इनटू द केज, सो एक दिन क्या हुआ कि इनपोंगो के केज में नैंडी को छोड़ा गया और चारों तरफ लोग जो थे वो डरे हुए थे, कोई पानी लेके था, कोई डंडा लेके था, अगर इन दोनों में मारपीट हुआ तो उन लोग को छुड़ाने के लिए कोई पानी लेके था, कुछ नहीं, सो दैट इफ द फाइट they try to separate them. Okay, we did not know how they will react. So hours he could see her in the cage, उसको देखती थी लेकिन उसको मतलब in the beginning they could not develop much interest into one another. So when the great moment of introduction came, मैंने इनपोंगो dating नैंडी का जब ये पहला डेट का दिन आया, so narrator is saying कि हम लोग ब्रश, नेट, वाटर, स्टिक लेके खड़े थे इन केस द एंगेजमेंट पार्टी डिड नॉट गो रोमांटिक as the woman magazine says, the author has a very good sense of humor. He's saying कि उनका अगर रोमांस जैसे मैगजीन में लिखा रहता वैसा ना हुआ और मारपीट दंगा हो गया, सो नरेटर इज सेइंग कि जू के सारे लोग तैयार थे कि कुछ ज्यादा डेंजर ना हो जाए। सी पुट हर बैक टू द वर्ल्ड, वो चुपचाप कोने में जाके बैठ के नीचे देख रही थी। नाउ शी वाज एक्चुअली इन द केज विद इनपोंगो, ओके, हु वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच, वहाँ एक ट्री था, तो उसका वुड बी हस्बैंड मतलब फियांसे होने वाला वो ऊपर बैठा था और ये होने वाली बीवी नैंडी नीचे बैठी थी, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे पे भी डाउट है, आप लोग के लैंग्वेज बोले तो थोड़ा स्पेस चाहिए। दे सैट स्टेडली कंटेम्पलेटिंग ईच अदर, अब वो लोग सोच रहे हैं क्या करें, कैसे बात आगे बढ़े। ओके, उधर सामने में लोग बकेट, डंडा, छड़ी, नेट लेके खड़े। दिस वाज अ क्रिटिकल मोमेंट, द टू गोरिल्ला एंड अवरसेल्फ फ्रोज इनटू, सब लोग एकदम जैसे स्लोमो में एक्शन कर रहे हैं, फ्रीज हो गए। To any spectator who did not know the circumstances, would appear like more bizarre Madame Tussauds exhibits. So Nat is saying कि हम लोग सब मैडम टूसेट में जो स्टैचू है हम लोग वैसे खड़े थे। देन इन पेंगो, मतलब वो जो गोरीला था, इन पोंगो stretched out a blank hand with finger with great sauce and claps the wire, फिर वो झूलने लगा। In a casual way, he sauntered in a semicircle, फिर नंदी को सेमी सर्कल करके फिर भाग गया। और फिर क्या किया, कुछ ग्रिप्ड हैंड फुल ऑफ हेयर एंड पुल्ड, फिर बाल उसको टान दिया। नैंडी बाय नेचर हैज ऑलवेज बीन, वो डर गई। बाय देन द बेयरिंग ऑफ अ तीतर, दांत दिखाने लगी, उसको भी गुस्सा आने लगा। The first round therefore went to Npongo, but before he could get exalted of male spirit, I felt that we should bring up our second line of defense. We removed the bucket and net and produced two large dishes. तो अब ये ऐसे प्यार मोहब्बत तो हुआ नहीं, नरेटर थॉट कि प्यार मोहब्बत कराने का एक ही तरीका है कि दोनों को खाना दो, जैसे लोग डेट पे जाते हैं, कॉफी पीते पीते प्यार हो जाता है, यहाँ कॉफी तो नहीं है, यहाँ उनके खाने का डिश दिया गया, तो बोथ ऑफ देम आर गिवन फूड। ओके, नैंडी हैव स्टिल स्मार्टिंग अंडर द इंडिग्निटी, नैंडी का बाल टाना था ना तो उसको अभी भी गुस्सा आ रहा था। ओके, दैट नाइट एनपोंगो एज यूजुअल स्लेप्ट, तो एनपोंगो नीचे सोया, नैंडी उधर दूसरे कोना में थी। तो एनपोंगो was sitting क्रॉस बीम, तो धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो गया, मतलब हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप चालू हो गया। So narrator is saying कि it was obvious that the marriage of Gorilla was a success. मैंने इनपोंगे एंड नैंडी का रिलेशनशिप is going fine. Although they were so different, मैंने इस दोनों का कैरेक्टर अलग था, एक बहुत झगड़ाली थी, एक बहुत काम थी, ये हंसती थी, वो गुस्सीला था, ये वॉचफुल था, वो
But as they say, opposite attracts, उनका relationship is going fine. Occasionally, however, his good-natured teasing, वो हमेशा लड़का जो था मैंने Pongo, I'm calling it male, he always used to tease the female. I mean, mm, Nandi, and he used to behave like a practical joker. Once he reached the limit, जब लेकिन ज़्यादा हो जाता, then she used to flash her eyes and hair and used to behave like this. Sometimes used to giggle, so ऐसे कर करके the relationship continued. Nandi might stand for you lie down कभी वो उसके सर पे वो सब मिट्टी फेंक देता and then this continued. Okay, and Bongo would brush up the dust फिर वो झाड़ लेता और ऐसे इन लोगों का रिलेशनशिप चलता है. To have acquired such a pair of rare and valuable animals, I consider an achievement. Narrator is saying कि मेरी किस्मत बहुत अच्छा है as an animal activist that I have such two rare pairs of Npongo and Nandi, and I consider it achievement. But along with this achievement comes a constant anxiety and tension. कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं नाक में उनका दूल्हा चला जाता है तो तबीयत खराब हो जाता है, कभी उनको निमोनिया, कभी कुछ और हो जाए, समटाइम उनका पॉटी से नहीं होता. सो नैरेटिव इज ऑलवेज अफ्रेड कि कि उनको कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना. जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए स्कूल में भेजते हैं तो उनको टेंशन रहा रहता है, लेट हो जाने से टेंशन होता है. सो समटाइम they fell ill, so narrator was very concerned about it and used to give him a lot of tension. One of the boxes was also installed. ओके, सो नाइटा का वो जो रूम मतलब एक एक केस था उसमें एक ऐसे बॉक्स था, यहाँ से लोग माइक में बोल के वहां से टीवी जैसा कुछ था, सीसीटीवी जैसा. सो नरेटर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑल द मतलब एनिमल फ्रॉम द सीसीटीवी कैमरा. सो एक बार ऐसे ही सम रिच पीपल हैड कम, सो नरेटर वाज गिविंग देम ए लेक्चर कि हम लोग ये एनिमल का काम करते हैं, हम लोग का ये एनजीओ है, वी सेव दिस एनिमल्स, वी सेव दिस एनिमल्स. सो इतने में माइक्स अनाउंस ऑफ मिस्टर डरल, गोरिल्ला को एक बीमारी हो गया, डायरिया. सो आई नो. सो सो नरेटर हैड टू लीव द पार्टी. ओके, मैंने उससे बात करने के बाद इनपोंगो एंड नैंडी ग्रू अप पीस, मतलब अब दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया बिकॉज उनका तबीयत खराब है, तो यू हैव टू कीप देम सेपरेटली. देन इनपोंगो फर्स्ट रियल इलनेस केम. So narrator was about to go to France, okay, on a working holiday. Working holiday means he will go and do a kind of presentation, animal के बारे में lecture, book होगा, seminar, workshop ये सब होगा. So narrator was about to go to France, okay, and it was a very big moment for him. Hotels were booked, people had come from all over the world, and bird lovers had come, bird experts had come for, so सब कुछ हो चुका था. अब 4 दिन बाकी है कि नरेटर विल गो फ्रॉम हिज कंट्री टू फ्रांस टू गिव दैट लेक्चर, टू डू दैट सेमिनार. अब एनपोंगो बीमार हो गया. एनपोंगो फेल इल एंड ही स्टॉप्ड ईटिंग. पहले वो फूड मिल्क यूज्ड टू कीप हिम अलाइव. नाउ फूड यू कांट गिव हिम मिल्क बिकॉज को डायरिया हुआ है. सो टेस्ट हुआ एंड टेस्ट में व्हाट ही वाज एग्जैक्टली सफरिंग फ्रॉम पता नहीं चला. ही लॉस्ट वेट विथ हॉरिफाइंग रैपिडली, बहुत कम दिन में बहुत कमजोर हो गया. एंड ही रिफ्यूज टू ड्रिंक मिल्क. सो नाउ देयर इज नो वे टू गिव हिम, एंड ही कुछ खा पी नहीं रहा है मिल्क ऑल्सो. सो दे स्टार्टेड गिविंग एंटीबायोटिक. ऑलमोस्ट एज ही वॉच्ड हिज फेस बिकेम वेरी श्रिंक, वेरी थिन. ओके, एंड दवा दिया जा रहा है बट अब उसके पॉटी में ब्लड आने लगा. So narrator has given up hope कि ये ठीक होगा कि नहीं. अगर नहीं हुआ तो how will he go to France? So narrator had already decided कि अगर ये ठीक नहीं हुआ, he will cancel his one of the most important trips of life, and he will be with his animal. This shows his love. He is ready to cancel his trip and ready to cancel such an exciting offer for an animal. So he is an animal lover. However, नरेटर थॉट के जब तक ये खाए पिएगा नहीं, दवा नहीं लेगा तो ये ठीक कैसे होगा. सो नरेटर along with his wife went to a very expensive place. From there they bought all kinds of fruits कि शायद ये कोई फ्रूट्स खाए, शायद ये कोई फ्रूट्स खाए और मतलब कोई नया फ्रूट उसको अच्छा लग जाए. सो दे बॉट ऑल काइंड ऑफ exotic and expensive variety of foods which was very expensive. Watermelon is not to everyone taste.
So narrator also bought watermelon and many other fruits. So कोई ना कोई उसको पसंद आ जाए. So narrator is saying till now he had never sampled watermelon. So we added watermelon to our loads. मैंने गाड़ी में watermelon भी ले आए. By now, the lack of food and drink, Npongo was in a very bad situation. Jeremy had managed to persuade him to drink. मतलब कुछ कुछ skimmed milk दिया जा रहा था और उसी milk में डिस्पेरिन और दवा दिया जा रहा था. ठीक है. Npongo was only too happy to take a gulp of milk. मैंने एक दो घुट पीता and then he did not. So how what to do? So narrator gave him lots of food. He refused grapes, avocado, and other delicacies. But he started eating watermelon. So his interest developed in watermelon. So he started eating it, and slowly he became interested in it. Okay, फिर watermelon is very good. It has a lot of nutritional value in it. So watermelon खा खा के he started developing his health, and antibiotic भी अब दिया जाने लगा. Slowly he started improving. Okay, so अब narrator is thinking कि अगर and last time में if he is not good enough, should he go to his trip or should he not? So narrator used to come and अब 2 दिन बाकी 1 दिन बाकी used to come and watch. So thankfully on the day he was about to go, he after a lot of injection and after lots of medicine being given to him, he started showing interest. That last narrator decided that he will go and to his trip, but he gave all the order to his servants, to his people. Okay, now he went to France. And in those days, we are talking about STD call was very expensive. So he used to call from there every day to ask about Npongo. So he did his BBC tour and came back. So at last, narrator is saying, I'm saying it in my own way. Narrator at last is saying that keeping an animal is like keeping a child, is like upbringing a child. It gives you a sense of fulfillment, it gives you a sense of happiness. But at the same time, it is filled with anxiety and tension because, as they say in Superman, with great power comes great responsibility. So when you're taking care of Npongo or Nandi or various other animals, you have a sense of fulfillment, but at the same time, you have a sense of responsibility. So, narrator, when he was there in France, thousands of miles away from his place, used to call every day to his people, the staff, and ask in Pongo Kaisa. It cost him a huge amount of money, but he was so caring. So, narrator, the last paragraph says कि keeping animal is a double-edged sword. उसी के साथ बहुत चिंता भी होता है. Ask any parent, they would exactly say the same thing. Bringing up a child is a very, very challenging thing. At the same time, it is highly fulfilling. Here is an analogy that the author ends up. He's comparing a father bringing up a child or a mother bringing up a child to an animal lover bringing an animal. So those who are animal lover, those who have pet in their house could probably relate to it much better than I can. That when you have a pet and they fall ill and when by chance if they die, uh, mm, the sorrow is no less than losing a loved ones. So here is a perfect example of how love for animal is manifested in the language of the story, is manifested in the character, it is manifested in the way he's describing them, not using the adjectives that is used for animal, but using those words that we use it for human beings. So this is the video of gorilla in the guest room, line by line. So if you want an analytical, thematic interpretation of the chapter, please do let me know in the comment box. Thank you for watching the video. So if you have found any benefit out of this video, please do share it with people who might get benefit, like it and subscribe the channel. Thank you for watching.